Is it visible to all? Yes, sir. So in the earlier lecture, we find out the various peaks for the IR spectroscopy. Okay, and some information about the that is fingerprint regions. These complicated regions here. This is the complicated number of peaks are there. This region is called as the fingerprint region. So it is related with the fingerprint of human beings. Okay, as we know that the fingerprints are identical. Okay, it's not match with the others. It is only match with the for the same persons. Okay, उसके फिंगरप्रिंट उसी के साथ मैच होंगे, दूसरे के साथ मैच होने वाले नहीं है। तो यही फिंगरप्रिंट यहाँ पर हमको हेल्पफुल है कि अगर जो कंपाउंड सेम है तभी ये फिंगरप्रिंट रीजन जो है कंपाउंड का सेम आएगा। इफ इट इज फ्रॉम द नेचुरल सोर्स और artificial source, but having the same chemical structure, at that time this fingerprint regions is exactly matched at that time. So we can say that both the compounds are the identical. इससे हमको यहाँ पे समझ में आता है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात क्या है इसकी, अब देखिए, अब आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के एडवांटेजेस क्या है। तो हमने एडवांटेजेस का कुछ पार्ट हमने देखा है, क्या एडवांटेज है, सैंपल कम लगता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है। ओके, उसके बाद हमने क्या देखा है, उसके बाद में वेवलेंथ तो क्या है, ज़्यादा नहीं रहती है उसकी। ओके, शॉर्ट टाइम लगता है, कम टाइम के अंदर हमको आईआर स्पेक्ट्रम मिल जाता है आसानी से। ओके, परमानेंट रिकॉर्ड हम जो है इन द फॉर्म ऑफ प्रिंट सेव भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं उसका परमानेंट रिकॉर्ड। ओके, सैंपल जो है कम से कम वेस्ट होता है। तो ये सारे इसके आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के एडवांटेजेस है, इसलिए वाइडली यूज होती है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डे टू डे लाइफ के अंदर यूज होती है। तो उसके बाद से हमने देखा था उसका फिंगरप्रिंट रीजन के बारे में बताया था मैंने, रीजन्स कहाँ से कहाँ तक रहता है। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये जो है स्लाइड दिख रही है ना आपको, लो, Yes, sir. तो इस स्लाइड को देखकर हमको लगता है क्या है कि ये जो है एनएमआर की स्लाइड है। ओके, इट इज फॉर द एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज क्या है फिर। ओके, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज क्या है, जैसा कि यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, स्ट्रक्चर के साथ उसके यहाँ पे एनएमआर के पिक दिए वाले हैं। ठीक है, पिक्स के साथ यहाँ पे पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन की वैल्यू भी दिए वाली, जैसा कि CS3 है, कहाँ पे दिखेगा, 1 के अराउंड दिखेगा। CS2 है, CS2 क्वार्टरनरी है। ओके, अटैच टू द बेंजीन रिंग, तो इसकी वैल्यू थोड़ी हाई है, ये 2 के 3 के बीच में दिखेगा, 2.4 के अराउंड दिखेगा। उसके बाद OH जो है, OH यानी अल्कोहलिक OH का OH बॉन्ड, ये सिंगलेट है, ये कहाँ पे दिखेगा, 6 के अराउंड में दिखेगा। ओके, बेंजीन रिंग के जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है वो समथिंग 7 के अराउंड में दिखेंगे। तो ये जो इंडिकेट कर रहा है ये हमको स्ट्रक्चर के इल्यूस्ट्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो हम आया फिर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको हम पीएमआर भी बोलते हैं, प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो हमको कई के लिए यूजफुल है। so it is the most important application is the structure elucidations. Okay, and that is the determination of the structure of the compound. So it is used for the confirmation of the saturated and unsaturated functional group present in the compounds. Okay, it is used for the information regarding the presence of hydrogen bonds or identification of the C's trans isomer. Okay, confirmation and the orientation in the compound can also be obtained. ये सारी चीज़ों के लिए हम इसको यूज करेंगे। दूसरी बात क्या है, जो केमिकल रिएक्शन रन कर रहे हैं, ओके, फॉर द स्टडिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शंस। So comparison between the IR spectra of the
reactant and what are the product can also be determined course of the reaction. इसके लिए भी इसका यहाँ पर यूज होगा, जैसा कि वो यूज करते थे हम कौन सा आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, सेम तरह से हम यहाँ पर पीएम प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ओके, तो इसका बेसिक क्या है एक्चुअल में, प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस का बेसिक क्या है, तो प्रोटॉन मैग्नेटिक मीन्स द प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी और इट इज वर्क on the principle of the nuclear magnetic resonance, okay, means the nuclear magnetic types of the radiations are used in this spectroscopy. It is based on the property called as nuclear spin. Atoms having the nuclear spin, proton having the nuclear spin. So it is based on the property called as the nuclear spin. Then the nuclei of the resultant atom spin and thus generate a magnetic moment along the axis of the spin in the certain atom when consider the proton spin, and this is called as the proton magnetic resonance spectroscopy. Okay, so the proton act as a tiny bar magnet in this case. Proton act as a tiny bar magnet because of the it is having the spin. So when the proton is placed, that proton which is having his own spin, when in place in the external magnetic fields, so its magnetic moment can be aligned or with or against the magnetic field, can be aligned with or against the magnetic field. So the at that time the energy required to flip the proton from the more stable to the less stable, this energy is provided by the external magnetic field. So in this case, sometimes energy aligned with the applied magnetic field and sometimes it is against the magnetic field. So depend conditions means it is depend upon the types of the structure is there. Okay, at that time, and that on the basis of that aligned and against the values also differ in the, that is the ppm values also differ in the each and the chemical compounds. So it is a PMR spectra clearly indicating the each and individual value, each and every individual value. So if we find the molecular formula of that compound, okay, the molecular formula will be the 6,8. Okay, if you find the number of hydrogen in this molecule, the hydrogen will be the how much? 10. Okay, number of oxygens is 1. Okay, so by using this formula means the C8H10O, we can find out the index for the hydrogen deficiency, and then index for hydrogen deficiency we can find out the structure also. This is the spectra clearly indicating that it is having the triplet, that is the CH3 groups, okay, CH2 quadruplet group, benzene ring having the multiplet. Here the multiplet is the from the hydrogen of the benzene ring, means hydrogen present on the benzene ring showing the multiplet types of the coupling. Then the OH is the, here is the highly shielded electrons having the more value, that is the near about the 6 ppm value. Okay, due to the electronegativity, and at the same time it is attached with the benzene ring. So the value is high. Okay, so upfield value is there. Okay, so in this way we can analyze the NMR spectrum or H1 NMR spectrum of the any compounds. So this is the printout. This is the output. Confirming the value, okay, confirming the value to which types of compound is formed in this chemical reaction, course of the chemical reactions. So these peaks are there. Okay, the area of the peaks, as this is high, okay, here is the area of peak is small, here is the area of peak little small, means the extent or intensity of that peak is depend of number of hydrogens. How the number of hydrogen is increases, that is extent of the peak, that is intensity of peak is also increases. If there is a CH3
two equivalent CH3 groups. So we can say that six hydrogens, okay, six hydrogens. So at that time, that six hydrogens are equivalent in nature, and that will be give the highest intensity. Means that is the lines will be again and upward in directions. Okay, again in upward in the direction. So NMR spectrum is a plot of the intensity of the absorption of the radiations and versus the magnetic field strength, and it is called as the proton spectrum on the nucleus involve a protons. Okay, so a spectrum of the NMR obtained by the placing a substance in the magnetic field of a content strength and passing radiations of steadily changing the frequency. The value of the field strength and the energy required to flip the proton matches the energy of radiations and causes the absorption. This is called as magnetic resonance. If there is magnetic resonance at that time, the value of the field strength and energy required to flip the proton matches. Means that is the energy, that is the magnetic resonance is there. If the absorption of particular frequency of depend on the effective field, and effective field depend upon the involvement of proton, that is the neighboring protons. So in the molecule, proton with the same environment. Here is the only protons, only CS3 protons. Three protons are of the same environment. Okay, here is the two protons of the same environment. So if the protons, if there are two groups, different groups, means in the case of the, if we see the examples of the ether, okay, diethyl ether. In this case, we will get the equivalent protons. We'll get the equivalent. That is the two CH3 group are equivalent, two CH2 groups are the equivalent. So the absorption, particularly frequency, depends upon the effective field, and the effective field depend upon the involvement of proton, that is the neighboring protons. In a molecule, protons with the same environment are called as equivalent protons, and they absorb the same applied field strength. The proton with a different environment are called as non-equivalent protons, and they absorb the different applied strengths. So to find out the, okay, whether it is having the equivalent proton or non-equivalent protons, we can uh, take the one example also. Example also is there. That is the one example is the CH3. CH3 is attached with the CH2. This CH2 is attached with the again CH2, and this is CH2 attached with the Cn. It is the one example. Another example is the CH3 attached with the CH2 attached with the oxygen, and then this is oxygen attached with the CH2, and at the last, that is the CH3 is also there, CH3. So these are the two examples. Okay, this is the one example, example number one, and this is the example number टू. तो दोनों एग्जाम्पल देखकर आपको क्या लगता है इक्विवेलेंट प्रोटॉन किस में होंगे? एक नंबर एक में होंगे या नंबर दो में? नंबर 2 में सर. यस, दो नंबर में क्या रहेंगे? इक्विवेलेंट प्रोटॉन रहेंगे. अभी मैंने यस इसलिए बोला है कि हमको चेक करना है अभी. ओके, आपने आंसर दिया इसलिए एक्चुअल में हम चेक करेंगे तभी पता चलेगा हमको कि इक्विवेलेंट प्रोटॉन कौन से. ओके,
जैसा कि अब ये सेकंड नंबर का एग्जांपल दिख रहा है, यहाँ पे दो CH2 ग्रुप हमको दिख रहे हैं, ठीक है, CH2 यहाँ पे दोनों सेम दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है देखिए। अभी ये भले ही ये क्या रहेगा, भले ही इसको हम क्या बोलेंगे, इधर कपलिंग करेंगे, अगर इसको हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 2 हाइड्रोजन, इसकी वैल्यू क्या मिलेंगी, 2 हाइड्रोजन। और क्या बोलेंगे, सिंगलेट मल्टीप्लेट क्या रहेगा ये, बोलिए, 2 हाइड्रोजन मल्टीप्लेट रहेगा। ओके, इसका अगर जो देखेंगे यहाँ पर, तो ये भी क्या रहेगा, 2 हाइड्रोजन रहेगा, और ये क्या रहेगा, 2+1 ट्रिपलेट। तो मल्टीप्लेट एंड ट्रिपलेट यानी ये भी अलग अलग हो रहा है। दूसरी बात, अगर जो वैल्यू देखेंगे केमिकल शिफ्ट की, तो ये अटैच है क्लोरीन के साथ, जो कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये अटैच नहीं है कोई ग्रुप के साथ, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर हाई रहेंगी, इसकी वैल्यू यहाँ पे 4 के आसपास रहेंगी, समथिंग 4 के पास ppm की। इसकी वैल्यू क्या रहेंगी, 2 के अराउंड में रहेंगी। इसका मतलब ये दो CH2 जो है इक्विवेलेंट नहीं रहेंगे। ओके, ये दोनों को हम इक्विवेलेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन हम नहीं बोल सकते। लेकिन ये एग्जांपल में, एग्जांपल नंबर 1 में आप देखेंगे, तो ये जो दो ये CH2 है, और उसके साथ में यहाँ पर दूसरा ये जो CH2 है, ये दोनों CH2 हमको सेम दिखते हैं। क्यों, उनका इन्वायरमेंट सेम है। तो CH2 को इधर से ऑक्सीजन अटैच है, इधर से CH3 अटैच है, ये CH2 को इधर से ऑक्सीजन अटैच है, ये CH3 अटैच है। एट द सेम टाइम हम अगर जो देखेंगे इसका रिलेशन इसके साथ में, तो यहाँ पे भी हमको रिलेशन सेम मिलेगा कि ये दोनों भी CH3 CH2 का अटैच है, ये CH3 CH2। तो मीन्स दो ये एग्जाम्पल नंबर 1 में हमको इक्विवेलेंट टाइप्स ऑफ द प्रोटॉन्स मिल सकते हैं। तो हम यहाँ लिखते वक्त क्या लिखेंगे, फिर 6 हाइड्रोजन लिखेंगे। लिखते वक्त क्या लिखेंगे, 6 हाइड्रोजन। क्यों लिख रहे हैं, इक्विवेलेंट प्रोटॉन से, और ये मैच इससे हो रहा है 2+3 यानी ट्रिपलेट, यहाँ पे आ जाएगा ट्रिपलेट। ओके, अब यहाँ पर ये 2+2 पे यानी 4 हाइड्रोजन, दिस इज 4 हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन, ये भी क्या हो जाएगा, ये 3+1 क्वार्टेट। तो दोनों दोनों सेम होने की वजह से हमने क्या किया, उनका फिर यहाँ पर इसको इक्विवेलेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन बोले हैं, और इसको एक साथ भी लिख सकते हैं इस तरह से, इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स को। तो ये जो कंसेप्ट था हमारा इक्विवेलेंट प्रोटॉन का, मैंने जो आपको बता रहा था, क्या बता रहा था कि इक्विवेलेंट प्रोटॉन जो रहते हैं इन मॉलिक्यूल्स, प्रोटॉन विद द सेम इन्वायरमेंट आर कॉल्ड एज इक्विवेलेंट प्रोटॉन, एंड दे अब्सॉर्ब द सेम अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ। इनकी अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। ठीक है, तो इतने पॉइंट हमने आज देखे। रिमेनिंग पॉइंट जो है